अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सब खैर खैरियत से होंगे Assalamualaikum. इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मिस सबीना, क्या हाल है आपके? I'm fine. How are you, Miss Jaweria? आई एम गुड, थैंक यू। सो वेलकम Nice बैक to टू आवर see एपिसोड you. नंबर 8। यस, और आज हमारी गेस्ट मिस सबीना विक्टर हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एन ईएलटी स्पेशलिस्ट, द डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इम्पार्ट एंड अ टीचर्स ट्रेनर, सर्टिफाइड टीचर्स ट्रेनर। यप। सो आज का टॉपिक जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा, आई बिलीव के इट्स द नीड ऑफ टाइम। It's super important and very crucial. Also, someone's there. Walaikum assalam, Mahir. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक बिकॉज आई बिलीव कि जैसे जैसे हमारा जो है वो हम प्रोफेशनली तो हम एक तरह से ग्रो करते जा रहे हैं, हमारा काम हम एक्सपैंड हो रहे हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, बट कहीं ना हमारे लोगों में जो एक बेसिक वैल्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही हैं, विच इज़ वेरी सैड and pretty ironic as well कि being professionals we should be working more professionally and we should be maintaining the decorum of the workplace, और rather कुछ उल्टा ही साइकिल चल गया है मतलब हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो आज हमारी जो है वो ऑनरेबल गेस्ट बेसिकली इसी टॉपिक पर जो है वो कुछ बात करेंगी और हमारे साथ जो है वो सारे ऐसे एस्पेक्ट्स शेयर करेंगी जो कि हमारी एक्चुअली लाइव ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, और हमें एक्चुअली जो होता हुआ नजर आ रहा है सोसाइटी में। So, yes, over to you, Miss Sabina. How are you? All right. Thank you, Miss Jaweria. Please share the slides. All right, here we go. Yeah, here it is. All right. So, you know what? When after going through some experiences myself, related to the things that I have observed on social media, I did not waste any time, to connect with you and tell you that let's, do a live session on this particular topic because, as you said earlier, it is the need of the time. And Very true. it has become now a major concern for everyone, for us, for a person like me who is now, has a lot of experience of what is happening all of a sudden. People are complaining about their workplaces and they are unhappy and they're leaving their jobs also, and then at the same time venting their frustration, on social media. So that's where, I said let's have we decided, we both, it was a mutual this thing that we should have a session on this. So I hope everyone can see the slides over here. Yeah, it's pretty much visible. It's Yes. pretty much visible. Okay. So now you see there were reasons for choosing this particular topic. The growing trend, as I said earlier, of complaints against workplaces, then is high level of intolerance, disrespect set by the keyboard warriors, the bashing, the harassment, personal attacks, people resorting to personal attacks, then is ranting on social medias, and then another reason is to provide solutions, to this particular ongoing problem, that Hmm. is by telling them on how to establish a positive workplace culture which can reduce the frustration, among the employees. Very true. So moving on. So the what am I going to present today? So the topics that I have felt which the audience should know or which should be discussed are the definition of a workplace culture, then is significance of workplace culture, that is its importance, then is characteristics of a positive workplace, then is signs of a toxic workplace culture, then is rants, the definition, purpose, and its effects. Then is netiquettes, which comes from the word etiquettes or netiquettes. And then is ways of promoting harmony at workplace. So moving on, this is workplace culture. I'm sorry, after what you can say, um, converting this from PDF to PPT, this happens. I faced this problem earlier. Oh, Anyway, no problem. It's completely visible. It's all fine. right, Everybody can read it. all Yeah. right. So, what is now workplace culture? Now, workplace culture is an environment which you set or which managers set for their employees. And
And this workplace culture organization's traditions, the attitudes, values, and behaviors of the employees. Sometimes a workplace culture, aligns the vision and mission of a organization with the attitudes of the employees in order to achieve the organization goals. Now, examples of workplace culture are open communication, active listening, diversity, respect, professional development, leadership qualities, and is hiring of right employees, um, etc. All right. Next, we move on to is the importance or the significance of workplace culture. Why is it important? First of all, it attracts talent. When we say talent, we are actually talking about the potential of the employees or the people who are working for a certain company or an organization. It leads to when there is a workplace culture, it also leads to positive engagement. Engagement means the active participation of the people who are working for that particular place. It also helps to improve their performance of the employees. It leads to a sense of community and a sense of belonging. And also, when this happens, the employees are willing to give their 100% also. And it also increases the loyalty of the employees, and it reduces the turnover. When I say turnover, I mean less number of people then leave that particular place. Okay. So then we come to the positive characteristics of a workplace. Now, when I say positive characteristics, I mean that there is a frequent and appropriate communication from the management or the HR to the with the employees. When this happens, it reduces the chances of rumors. When the manager communicates with employees, it leads to a good communication throughout the organization. Number two is the real teamwork is encouraged. When this happens, then there is less chances of disagreements among the team members or the team members with the employees. Number three is the organizational goals are known and employees know how their role fits in the big picture, meaning to say that the awareness of the organization goals helps the people who are working to understand what role they should play, or what part should they play in order to make that particular organization achieve their goals. Then is the workload expectations are appropriate, meaning to say that people are given workload according to the designation that is allotted to them. And positive workplace culture, eliminates overtime or sitting, late hours. It eliminates this. Then another important factor is the workplace culture also believes in maintaining a balance between work and personal life of the employees. People are not bothered, they are not disturbed at their homes with the unnecessary calls or with the text messages or the WhatsApp messages and all that. Okay. Next, the employees are treated fairly, and this eliminates the chances of being treated unfairly or there is no sort of favoritism. Then is number seven is then harassment, disrespect, discrimination, bullying, unsafe behaviors, and violence are not tolerated. And next is employees. The problems, if there are employees who are facing certain problems, it is dealt immediately, rationally, and without letting the organization know who was facing the problem and how it was solved. That's more mature way of dealing with problems. Then is number nine is the employer finds ways. There's recognition of the efforts which are put by the employees through appreciation, or through what you can say a positive feedback. Then is a positive workplace culture does not tolerate unethical or dishonest behavior. And as I said earlier, employees are frequently given feedback for the work that they do.
I wish this was there. Must be there in organizations, but that's the sad thing. That's common situation. That is signs of a toxic workplace. Now, Miss Javeria, can you see on the screen what is happening over here to this person, to this lady? Yes, she's kind of like bombarded with a lot of work, I believe, and it's sort of Yes, that perhaps if I go for the graphical representation, she's sort of like facing a burnout, yes, if I'm not wrong. yes. It's a burnout. It's an example of an employee burnout. Hmm. All right. Now, Yeah. what are the signs of a toxic workplace? You see, toxic workplaces come with a major red flag. Yes. And what are those red flags? One is lack of work boundaries. Hmm. There are some organizations, which glorify overtime, and this leads to burnout, stress, exhaustion, work pressure. And when people are applying for jobs, it is advised to them to look into these traits at the time of recruitment. There are some organizations which post in their advertisements should be able to work under pressure. For them, they think that it is something very good, but as such, if you see, this is a trait of a toxic, what you can say, workplace culture. Then next is the lack of trust, among colleagues. Now, another, what you can say, a negative sign is the employer does not trust, the certain employees, and also ask for direct reports, about their performance. And the third point, which I feel is so bad, that is no room to make mistake. That means they expect people to be perfectionists, to be experts on being hired. They expect the work to be 100% accurate. People gain mastery in their jobs after going through certain experiences, after learning from their mistakes, after being taught by the employer how to do a certain how to do a certain job or a task or a project. But if there are no if there is no room to make mistake, that means this is something very bad, very negative. Then is treat others with contempt, roll eyes during meetings, personal attacks on work style. Now, contempt means to have that negative feeling that another person is worthless or beneath consideration. Now, for example, if during a meeting a boss rolls his eyes at a certain employee, or avoids listening to the suggestions of that person, or constantly picks on that person, it means that the manager has contempt for that particular employee. And next is unhealthy interpersonal relationships. Now, if the boss or a manager or an employer builds stonewalling means shuts down all the communication, or reduces the conversation, frowns constantly, is constantly angry, and does not smile. This leads to unhealthy interpersonal relationship. Then no one would like to go walk into the office, of the manager and share their problems. And then the next point is lack of support for employee growth. When people are hired, they are expected to figure out themselves how to do a certain task, because there is no mentoring, there is no guidance given to them. And We when this also have happens, questions, so can we take them along side by side? yes, yes, sure. Acha, can you see the questions on the screen? Just let me come here. Also, walaikum assalam to everyone Okay, who's walaikum listening out there. assalam, everyone. Okay, thank you so much, Anita. Okay, can I just finish with this slide so then we can then listen to the Okay, questions? sure, sure. Okay, Ms. Javeria, thank you. Yeah. Okay, so I was talking about the lack of support. When this happens, when there is no sort of mentorship or guidance given to the employee,
it reduces the chances of professional growth or job opportunity. Next point is gaslighting. Now, gaslighting is a psychological manipulation where the abuser plants seeds of self doubt in the victim. For example, if in a certain organization employees are given to work on a project with a specific goal or a method, and then at the review time, the manager or the employer or the in charge changes their statements by saying that I did not prescribe this particular method or this in goal, that creates the seeds of self doubt in the people who have been working on the task. इसकी And then थोड़ी-सी मिसाल यूँ मैं ज़रा-सा मतलब दूँ कि जी लाइक जी फॉर जरूर एग्ज़ाम्पल कि अगर जी मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर एक्चुअली कोई और हो, मतलब वो इविल कोई और खुद हो, और जो जी उसका अपना फ़ॉल्ट है वो सामने वाले पर ब्लेम लगाए कि ये मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, ये तो हाँ आपकी प्रॉब्लम है, ये तो आप हैं। यानी कि द कल्प्रिट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एक्चुअली पुट्स हिज़ हर ब्लेम सामने blame वाले on के ऊपर। others, अपने yes, आप को बिल्कुल यानी कि वो क्लीन शो कर रहा है, जबकि प्रॉब्लम उसके एंड से आ रहा है मतलब। exactly. Blame game mistake, the person blames the other person. And under such circumstances, no one, that the person who's worked on the project or the task would feel demotivated and would never want to do such a task again. Then we talk about work stress. When people are made to do strenuous work, over time, and being given to work under pressure, it causes work stress. And when work stress happens, it leads to, it affects the digestive system, it causes fatigues, it causes aches, it causes sleep disorder, it also causes panic attacks and also depression. Then people who when people observe a toxic environment, they start keeping themselves away from the work, they keep themselves aloof from interacting with colleagues. And then the last point is they take up this thing, that is the high turnover, they start leaving that particular job. And when there is a high turnover means when people quit their jobs, it affects the image and reputation of an organization. People leave a job or a workplace for several reasons. It can be due to poor, what you can say, compensation, less salary package, or gaslighting, or maybe being targeted, constantly targeted for something which they never did. That same blame game, that gaslighting part. It can also be because of there is less opportunities or professional growth. These are some of the reasons why people then tend to prefer quitting their job and then look for better work opportunities. Ji, Ms. Javeria, you were saying something about some questions. Yes, there are two questions from Mahir in the Yeah. comment. Are they Where visible is to you as well? just let me have a look at it. um, Hmm. Yes, Mahir is saying, but what the teacher do if the organization is not encouraging the teachers due to inflation? Teachers are bound to do these job. My organization also has too many red flags. And then she continues to write that mostly teachers left the job in my organization due to workload and due to behavior of the principal, highest experience, and teachers, they have been working there for 16, these are comments, for 16 months, which is very sad, Mahir. You have actually shared your observations of what you see happening at a toxic workplace. What you shared are actually examples of a toxic workplace, and this is very sad and alarming. And if you see, it's increasing day by day, right, Ms. Javeria? Right, very true. All right, so these are very good comments and observations by Mahir. Very good. So once this happens, so then we need to And come also, up. Acha, there's sorry another to thing. cut you off in the middle. I just have to say one thing to our viewer Mahir, that
if you're already feeling, and since you've already, I mean, understood the Hmm. fact that your workplace is just not your type, or probably, Hmm. I mean, it's like not good for your mental health, then my suggestion to you is that, Hmm. you already better start looking for another opportunity, because see, there are Yes. always opportunities around, and we pave our own way, right? हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग में ऐसी दूसरी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अवेल Hmm. कर सकते हैं, बिकॉज nothing is beneficial at the end of the day if it's coming at the expense of your own mental peace. Mental अगर health. आपकी मेंटल पीस, अगर आपकी वेल बीइंग को क्रॉस करते हुए या उसकी बलि चढ़ते हुए अगर कोई चीज मिल रही है ना, तो फिर आई रियली डोंट थिंक यार वो कोई पॉजिटिव चीज है। तो मतलब आप Yes. ऐसा वर्क एनवायरनमेंट तलाश करें जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बेटर हो, ना कि और ज्यादा थ्रेट हो। Hmm. Very true. Very true. 20 कैंपसेस के And लिए moving on. All कैंपसेस right. तो सारे Next thing हमारे we खोल रहे थे, लेकिन कोई फायदा yes, नहीं, एथिक्स से खाली होता है। exactly. And next thing we come to is about rants. Ranting, which has become, an in thing nowadays, right, Miss Jaweria? आपने यहाँ दिल के Something, तार छेड़ दिए बहुत जोर से। yes, something, which we observe mainly on social media, Facebook and बहुत ज्यादा। Facebook mostly, yes. और So पिछले what कुछ is लाइक 2 सालों से आई बिलीव ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नहीं बढ़ रहा, पैंडेमिक के बाद एक अजीब the किस्म की टॉक्सिक वेव आ गई है बहुत ज़्यादा। G. And ranting is now become an order of the day that any person just comes and vents out on social media about ओह their यस, frustration. दे आर ट्रीटिंग सोशल मीडिया ग्रुप्स लाइक देयर माइका, लाइक दे कैन जस्ट कम एंड स्टार्ट अबाउट एनीथिंग एट ऑल। Yes. So it's very important to share with our viewers what are basically rants. When I was doing some sort of this thing research, I wanted to see what are rants. Though sometimes I also post rants, but it's just for to it's a positive rant. I don't resort to negative rants. So over here, ranting is an actually an argument which is more where you let out your emotions. And over here, the vocabulary.com says that it is not shaped by facts, meaning to say that it is more about opinions. All right. And यस, what's the purpose of rants? Now, rants, people do ranting. Mostly unpleasant experiences are shared through rants with others, and they vent out their frustration about, a certain thing, a bad experience or a disapproval at their workplaces. Maybe the employer mistreated them, or they were insulted on a certain day. Maybe they were not given their salaries on time, or maybe a certain portion of the salary was slashed, or maybe they were terminated from their services without any prior notice. So these are some examples of the rants that we often get to see. Then when people post rants, they do it with the third purpose, that is to be heard and to be consoled, that is to gain sympathy, not to be bashed. That is why mostly people, when they post their rants, they always write, do not bash me, do not bash me. But we know that when they say the do not bash me, we know that there's a rant coming up, right, Ms. वेरी Javeria? ट्रू, वेरी ट्रू। एंड अगेन वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। देखिए, एक होता है सेल्फ अवेयर होना और एक अकाउंटेबल होना होता है। वो Gee. बहुत ज़्यादा जानते हैं कि हम जो कहने वाले हैं वो कोई इतनी फ्रूटफुल बात तो हम कहेंगे नहीं, हमारे हाँ. मुंह से एनोनिमस होकर फूल तो झड़ेंगे नहीं, तो हाँ. पब्लिक डेफिनेटली बहुत अच्छा बैकलैश आएगा ठीक ठाक। तो दे आर Gee. ऑलरेडी काइंड ऑफ सेफ गार्डिंग देमसेल्फ इन एडवांस के भाई हमें कोई ज़्यादा कुछ ना बोले, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा विक्टिम हुए हुए हैं इस वक्त, मतलब। Gee. Gee. Absolutely true. And when people post rants, it will always come with an effect. वेरी ट्रू, With डेफिनेटली। effects. The first effect is when you post a rant, the person who's posting feels, a short relief. Relief meaning in the sense that, oh, I finally let out that negative emotion from inside myself, वेरी right? ट्रू, या। But if a person constantly rants, it actually is harming the mental well-being of that person, because that aggression keeps building inside that person, आप अपने which is not सबकॉन्शियस good. माइंड को तो यही फीड करवा रहे हो ना बेसिकली, कि मतलब Hmm. आप डे इन एंड डे आउट एक चीज के ऊपर खुद आप अपने आप को, यानी इतना ज्यादा व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली, कहते हैं ना कि वो जो एक फीलिंग होती है जलने कुड़ने वाली,
मतलब जी, व्हेन जी। जस्ट दैट वर्ड जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट कि जब आप उसके लिए हर वक्त आप अपने आप को अंदर ही अंदर आप जलते रहोगे, व्हेन यू नो काइंड ऑफ मेक जी। योरसेल्फ लाइक सो टॉक्सिक फ्रॉम द इनसाइड, तो डेफिनेटली हुँ, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी चीज का आदी हो जाता है कि यार यहाँ तो कोई पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। जी. So that is not good actually. वेरी And ट्रू। second, yeah. And second point is when people post, rants which are irrational, unclear, or negative, it triggers the keyboard warriors. Oh my God! Then they start यस। bashing that person ओह with ऑल्सो their आई जस्ट रिमेंबर दैट वर्ड सल्किंग, जब हम सल्किंग की वो yes, हैबिट बना लेते हैं ना, अंदर ही yes, अंदर हर वक्त एक एग्रेशन भरे रखना, इट्स ऑल अबाउट सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम द विद इन। जब तक हम अंदर yes, से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और पॉजिटिव नहीं करेंगे ना, सारा आउटर वर्ल्ड हमें गलत ही दिखेगा। बिकॉज यू नो समवन एक्चुअली सेड दिस थिंग के मतलब वी अंडरस्टैंड पीपल एंड सी देम एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर सेल्व्स आर। hmm, जैसे हम होते हैं वैसे ही तो हमें सामने वाले दिखेंगे ना। हम अगर yes, अच्छे होंगे, अच्छे रह के चलेंगे, तो हमें सामने वाले में भी अच्छाई कुछ ना कुछ नजर आएगी। G. And you know what? Keyboard warriors are those people who are also emotionally driven. Oh They yes. just want to post things what is there in their minds, regardless of the fact that they are, actually ruining their own reputation on social media. Very true. And There, everything comes with a price. Everything comes with a yes, price to something. तो ऐसा तो है नहीं कि repercussions है नहीं। अगर yes, वो anonymous भाई बहनों से मैं थोड़ा सा एक अर्ज करना चाहती हूँ, खवातीनों हजरात से, कि उनको ये बहुत बड़ी खुशफहमी होती है ना एट टाइम्स के हम तो yes. anonymous हैं, लाइक वाओ हमारा नाम तो दुनिया से छुपा हुआ है, तो Hmm, हमारे बारे में तो किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो hmm. माय डियर फेलोज, आपका नाम सबसे पहले एडमिन्स को तो बहुत अच्छे तरीके से साफ नजर आ रहा जी, है, मॉडरेटर्स को नजर आ रहा है, ग्रुप में बाकी लोगों को बेशक ना दिखे, बट जो एक्चुअली जो ग्रुप्स को वो कर रहे हैं, फंक्शनिंग उसकी हैंडल कर रहे हैं, एडमिन मतलब शिप देख रहे हैं, तो उन्हें सब दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि exactly. आप अगर उनसे उनके सामने भी आप इतनी ज्यादा ये अपनी वियर्ड बातें और ऐसी बातें जब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपकी क्या इमेज, आपका क्या इंप्रेशन रह जाना है उन लोगों के ऊपर। चले अगर उन्होंने किसी तरह एक आपका पोस्ट अप्रूव तो कर भी दिया इंसानियत के खातिर कि you're so Yes. boiled up and you know brewed up with so much, तो चलो let you went out, which is actually not very right at all the times, but okay fine, but आप क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं उनके ऊपर अपना, वही बात Exactly. है। And you know what? One other thing, Javeria, the job recruiters, when they want to know about Anonymous, they will always ask the moderators or the admin of that group, for further Oh yes, details. they can, सबको पता है how things are functioning, और जो famous And बड़े बड़े आजकल yes, and एजुकेशन ग्रुप्स हैं, everybody knows exactly, exactly. And then you know what? Number three, when they get to know that, if a certain person is constantly ranting, complaining, putting up negative complaints, exactly। they are actually losing their nobody would want to hire a person who is complaining Oh about yes, their task, everybody want to, about right? their workplace. Yes, और बाज़ because you औक़ात see, तो ऐसे लोग खुद people ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं ग्रुप से, दे आर ब्लैकलिस्टेड gee, बिकॉज़ ऑफ देयर ओन बैड yes, बिहेवियर। yes. So you see, uh, think twice when you are putting up rants, because ranting can also comes with a price, and that price is your reputation. और मिस सबीना, अगर रैंटिंग एक आध बार होती है ना कि वंस इन अ ब्लू मून, अगर इंसान ने सारी जिंदगी जी, में एक बार एक बात कह दी, चलो समझ आता है कि इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड जी, है, एक बार मन हल्का कर लिया। जब एक चीज जी, मुसलसल आपकी आदत बन जाती है ना, उसको हम पेस्टरिंग कहते हैं yes, और नैगिंग कहते हैं। ये जो नैग करना होता है ना, मुसलसल एक बात को लेके yes, पीछे बढ़ जाते हैं हाथ पाँव धो के, कि एक ही बंदा पता नहीं कितनी कितनी बार एक ही चीज मेंशन कर रहा है। एवरीबडी, पाकिस्तानी yes, कौम तो खास करके, दिस जंपिंग इन द बैंड वैगन वाला ट्रेंड जो हमारे यहाँ है, कि बस एक बंदा कर रहा है तो अब सारी दुनिया ने उसकी देखा hmm, देखी में वही काम करना है, फिर वो जो उसको देख के अगला 50 बंदा और वही सेम काम करेगा। तो ये कांस्टेंट एक वियर्ड साइकिल बन जाता है अब्यूज का और कर्सेस जी, का। ये भी एक तरह yes, का अब्यूज है। अब्यूज खाली yes, फिजिकल या मतलब एक वो यानी कि कोई भी किस्म का इस तरह का नहीं होता, मेंटल वगैरह yes, साइकोलॉजिकल, ये इमोशनली भी आप yes. लोगों को परेशान कर रहे हैं बार बार। आपको पता है You know, आपकी कोई भी गलत मिसलीडिंग बात अगर किसी ऐसे लोगों के जी, मुंह से जो निकलती है, उनके वो कीबोर्ड वॉरियर्स की हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, इफ दे राइट जी, समथिंग सो बैड अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू टार्निश देयर रेपुटेशन और यू नो ट्राइंग टू ब्रिंग देम डाउन फॉर सम रीजन, hmm, तो उनका तो इमेज जा ही रहा है, मगर वो ये जो नेगेटिविटी का सीड बो रहे हैं किसी और के दिमाग के अंदर जो उस जगह पे अप्लाई करने जा रहा हो, उसका मामला वहां पे अगर कोई ना कोई खराब होता है, या अगर hmm, किसी ना किसी तरह वो अपने फैसले exactly. को लेते लेते रुक जाता है,
तो इसका भी सारा ओवरऑल एक कितनी बुराई उसके अपने अकाउंट में लिखी जाएगी। हमें लगता है खाली हम ये दुनिया को लेके चल रहे हैं। आप ये भी तो सोचे ना, देयर इज वन omnipotent like creator up there as well who's noting your actions and deeds। तो आप तो हर You तरह know, से गलत कर रहे हैं। Ms. Jaweria, I want to give you an example. श्योर Like there श्योर। was a person who was sharing with me that that lady was told that why you always so active on social media, you're posting comments and you're giving solutions, you're doing this and doing that, giving advice and all. या The coordinator the very next day went and targeted that teacher, that why are you why are you constantly going and commenting on social media. Now isn't that also very bad in itself, that you are targeting, that means you are spying on your employees on social media, या who एंड is दैट टू आफ्टर स्कूल, जो कि प्रेमिसेस में आता yes, ही that नहीं too है। also after school. That यस, is so bad, that is called unprofessionalism. they're stalking their personal lives and having a Yes, check of them as to what are they up to every single minute of the day. exactly. And acha, the fourth point is actually related to those who put up, complaints where which are clear, and then they are given solution to those problems. So these are also some of the rants where a quick solution is given to the problem. Maybe a person is looking for a better job, and at once the recruiter comes and says that please send your CV to this so and so school, or inbox me, or etc etc. So there are some rants which do get वो तो फिर क्वेरी हो गई created. ना किसी की, मतलब Gee, वो तो yes, नॉर्मल सी बात है। फाइन, दैट इज व्हाट द ग्रुप्स आर मेंट फॉर। yes. So this what happens. Acha. So then we come to the term that is netiquettes, which comes from the word etiquettes. Netiquettes means, maintaining a certain decorum on social media or the internet. All सही right. है। Now, netiquette is actually referring to a ये code of सबीना, इस पर conduct. तो बाकायदा कोर्स लॉन्च करना चाहिए, बहुत बड़ा फुल फ्लेज। G, G, बहुत G, जरूरत है G. हमारी सोसाइटी को। Yes. And when people, and this also goes out to the keyboard warriors, you need to watch out for your words, your comments. You need to watch out, because if you resort to personal attacks, verbal harassments, or negative words about harsh words about someone, you are actually being non-netiquette. That means you do मिस not have सबीना, this. आपको याद है अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म पर कुछ एक इशू हुआ था। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कीप द नेम कंसील्ड एंड Yes. बट अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट अकर्ड ओवर देयर। वहाँ पे एक बीबी थी, उनको काफ़ी परेशानी थी कि स्कूल में टीचर्स के ऊपर काफ़ी काम होते हैं। तो G. उन्होंने कुछ फरमाया था कि जो है वो टीचर्स को तो इतने सारा लोड डाला हुआ होता है उन पे, एंड लिहाजा like the plans should be made by the coordinators, and the circulars should be distributed by the admin, and this particular attendance Yes. work should be done by some other person। तो फिर जो Yes. है वो अटेंडेंस जो सॉरी असेंबली के अंदर जो सारी प्रैक्टिस या जो सारे वो जो होते हैं G. सेशंस कंडक्ट होते हैं, दैट शुड बी कंडक्टेड बाय समबडी एल्स। मतलब उनकी सारी उनका दुखड़ा सुनने के बाद माय ओनली कमेंट टू हर वाज दैट कैन यू प्लीज एग्जैक्टली टेल मी, लाइक कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली अ टीचर्स रोल इज देन एट अ स्कूल? just take the salary and go home? Like if you've listed, I mean, a lot of things that are to be done by this and that person, तो मोहतरमा आप क्या करने जा रही हैं स्कूल? तो आपको याद है Exactly. उस पोस्ट पे कितना तूफान है बदतमीजी था? एंड इवन व्हेन यू ट्राइड टू गिव इन योर टू सेंट्स, Yes. किसी ने कितना बुरे I तरीके was से ट्रीट targeted. किया। Yes. यस, I was literally targeted, and I was, people started sending me personal. People became personal with me by saying that I am, my experience, 20 years experience, यस, is something detrimental to their reputation, which is so यस। embarrassing. एंड समबडी आल्सो सेड कि आपके Saveria, टीचर्स can we just stop for a while? There's a zan at my side. ओके ओके, श्योर श्योर। Sure. We've already have like 24 minutes. 34 minutes? Okay. Why don't you just mute? Mute. All right. So since the azan is going on Miss Sabina's side, so yes, I can just I'll just you know wait for like a few minutes until she comes back.
If anybody has any questions till then, you people can please feel free to post your comments over there. I'm here to answer. And yes, I can see a few people are watching us right now. If you have any, thing to chip in your 2 cents on this regard, please feel free to put in your, questions. We'll be more than happy to answer, or any experience that you yourself have gone through. I mean, related to this entire thing, क्योंकि ये बहुत बड़ा dilemma है हमारी society का actually. और मारूक, thank you so much, dear. Appreciation from you people means a lot. All the audience. एक्चुअली ये बहुत एक हर्टफुल मसला है यार, जो बहुत सारे आजकल के मतलब हमें एजुकेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो जिनका मकसद कुछ और ही था, उनकी एडवेंट का, उनकी ओरिजिन का, वो जब बने थे तो वो ये वाला पर्पस लेके थोड़ी इस्टेब्लिश हुए थे, वो वाले ग्रुप्स सोशल मीडिया पर के उनको ये नेगेटिविटी को फ़रोग देना है। वो तो ज़ाहिर है कोई ना कोई पॉजिटिविटी प्रमोट करने के लिए, लोगों को जॉब सीकिंग में हेल्प करने के लिए बने थे। और अब हम दिन ब दिन देख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक अजीब सी एक मतलब तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रहता है। और दुःख की बात तो ये है कि मतलब इतनी ज़्यादा बैक टू बैक इतना कंप्लेनिंग नेचर बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करने के बजाय बहुत सी दफ़ा एडमिन्स और मॉडरेटर्स भी दे जस्ट सिंपली क्वाइटली लेट दीज थिंग्स स्लाइड बाय। वो इन चीज़ों पर एक कंट्रोल नहीं लगा रहे हैं। बहुत ही रिसेंटली आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक इंसिडेंट। एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ हुई थी। बेसिकली वहाँ पे किसी ने बहुत ही बड़े चेन स्कूल का नाम ले लिया था। ऑब्वियसली अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, क्योंकि हम कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह इतने एथिकल और एजुकेटेड लोग हैं कि हम किसी भी अदारे का नाम या जगह का नाम या किसी इवन ऐसे ग्रुप को भी हम कभी डायरेक्ट बैच नहीं करते, हम किसी का नाम नहीं लेते। सो कीपिंग द नेम एनवेलप्ड, आई वुड लाइक टू शेयर दैट एक चेन बड़े स्कूल्स में आता है, वो ग्लोबली इंटरनेशनली भी वो बड़ा फेमस स्कूल है। किसी बंदी ने वहाँ पर एट रैंडम एकदम से उसका नाम ले लिया कि उनके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ पे, कि बिकॉज ही वॉज इन टू इनफिडिलिटी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो उन्होंने जाके उस अदारे का नाम लगा दिया कि इस अदारे की एडमिन के साथ मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है, एंड दिस इज हैपनिंग एंड आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड सो a lot of people in that particular post, I mean in the comment section thread, were telling that lady कि देखो आपका मसला अपनी जगह है, but why do you have to take a school's name without any reason for no good, बिला वजह का। और आप उस स्कूल का नाम क्यों मेंशन कर रहे हो वहाँ पे, अगर प्रॉब्लम आपके हस्बैंड के अंदर है। Yes. उनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी का ध्यान रखो ना, उनकी स्कूलिंग घर बैठ के करवाओ। हाउ डज दैट मेक एनी स्कूल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हस्बैंड्स पर्सनल कॉन्डक्ट? ही इज नॉट अ मैन चाइल्ड, ही इज नॉट अ 2 ईयर ओल्ड कि आप अगर मतलब जाके आप उनके चक्कर में, तो लोग समझते नहीं है उनका पर्सनल मसला होगा, सोशल मीडिया पे वेंट आउट, उनके फैमिली में किसी बंदे का मसला होगा, उस पर्टिकुलर एजुकेशन के ग्रुप में जाके वेंट आउट, उनके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, उस पर्टिकुलर ग्रुप पे जाके वेंट आउट। भाई हर मसले का सोल्यूशन एनोनिमस होके एक एजुकेशन के ग्रुप पे जाके कहानियां लिखना और बुराइयां लिखना और बैश करना नहीं होता अदारों को। इतने बड़े बड़े स्कूलों को, इनको क्या लगता है कि एक स्कूल जो 70 साल 75 साल 60 साल 55 सालों से चल रहा है, वो उनकी 2 3 फालतू की ऐसी घिसी पिटी बातों से टार्निश हो जाएगा, या इतना यानी कि डिमोलिश हो जाएगा कि उसको आप सिर्फ हस्ती से ख़त्म कर देंगे, या आप उसको इतना डिफेम कर देंगे कि वो अपने एडमिशन खो देगा या अपने रिक्रूशन बंद कर देगा। इससे सिर्फ उन लोगों की अपनी इमेज पर असर होता है, स्कूल की ज़ात पर कोई असर नहीं होता। तो इन लोगों को प्लीज ये हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए कि दे आर मेकिंग देम ओन सेल्फ द बैड शीप एंड ब्लैक Exactly. शीप, एंड इट्स गोइंग टू लाइक आई मीन हार्म नो वन एल्स। तो ये Yes. बात में सबीना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस थिंग? You're absolutely right, Miss Javeri mentioned, earlier, that your words and actions actually say a lot about your personality, and one needs to be mindful on what you say, on social media. And even when you are unsure about a certain organization, don't target or mention that organization's name, बिल्कुल। if even if they were not involved in a यार certain मतलब problem पांचों or उंगलियां a बराबर तो नहीं है ना, फाइव issue. फिंगर्स आर नॉट इक्वल। और उस अदारे ने Exactly. आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो एक अदारा है, वहां पे हर बंदा काम कर रहा है, वो एक ऑफिशियली एक ग्रोन एडल्ट है, वो अपने कॉन्डक्ट के लिए खुद जिम्मेदार है ना। G, you're right. So, one needs to be polite, one needs to be respectful. All right. Very So, true. moving on, then, where we spoke about, the
toxic workplace culture, we also need to present then the solutions, like how you can promote harmony at workplace, which brings us to the title, that is promoting harmony. So then how can that harmony be established at the workplace? Now, it can happen with these strategies that I have mentioned over here. First of all, the first important strategy is open communication. Open communication, that is from the management or the HR with the employees. Your open communication actually will be the best solution to ward off all misunderstandings, misconceptions, or the problems that are arising. When you are an active listener, when you are willing to listen to the problems that are being faced by your team. Second is create such an environment, so sorry, create a physical and emotional environment where your workers feel safe, where they are not going to be targeted for even a minute mistake that they make at the work, where they do not face contempt, they do not face bullying, they are not what you can say gaslighted for the performance. Right. Then is, if there are complaints, it should be taken seriously, it should be dealt with, solved immediately, rationally, without letting the others know that who was facing the problem and how it was solved. That is a mature way of dealing with problems. Not that you later on WhatsApp, then nothing comes up, a story of Lana teacher or Lana coordinator faced this problem and I solved it this way. That is immature. That is unprofessionalism. Then is focus on solutions. If there are problems, then focus on quick solutions. Then is be a role model. Your actions, your behavior should be an example for others where people see you as an inspiration Right. and they want to learn to be like you. Then is provide feedback to the employees, just like how teachers give feedback to the students for their classwork, their tests and the exams. In the same way, the people who are working, whether it's a corporate sector, whether it's an educational field, they need the feedback for their work. If they need to work, if they need improvement, then tell them how they can make improvements in their work, rather than just sitting quiet and observing them making those, continuing to make mistakes. Then those who are putting their heart and soul into the jobs, please appreciate their hard work. A little appreciation goes a long way. Words way, and employees will always remember that employer who who also just said maybe two words of appreciation, well done. That also means a lot to the person who's working hard. Or even a smile, that also means a lot. Or even what you can say, a certificate of not even a certificate of appreciation, your words, your kind words mean a lot. Then is celebrate big and small wins. Big win, if you see someone who came on time, who finished their work on time, appreciate it and tell others that this is really If teachers are giving their duties like something on time, if is they're worth being mentioning. punctual Yes, for their duties yes. that are assigned to them. All sorts of duties, yeah. It should be appreciated. Big and small wins should be appreciated, should be celebrated. Maybe you give the teacher, what you can say, a small card, like you leave it in their cubicles, like, well done or something with a smiley. Like I once received it. Then is acha, when this happens, then at the same time, we are living in the 21st century. This is the last point. Provide opportunities for professional growth. We are living in the 21st century, whether it's the corporate or educational field. It is important to keep ourselves abreast with the latest happenings in your respective field, right? Whether technology in for example, if it's the educational institution, what pedagogies can be used to which can make students fall in love with their learning, or how we can make learning easier for students by using maybe technological tools, or artificial intelligence tools. So teachers need to be given professional development for this, and when they are given professional development, it also leads to a promotion
or for professional growth of that person. बट मिस सबीना, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जी, बहुत सारे अदारे देखें ऐसे हैं, हमें पता है, जो कि माशाल्लाह काफ़ी नामवर भी हैं, चेन जी, स्कूल्स भी जी, हैं, उनके अलावा भी बहुत बड़े-बड़े हैं, जो जी, अपने टीचर्स पर बहुत ज़्यादा वक़्त, पैसा, हर चीज़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और वो जी, बाकायदा प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज़ वग़ैरह हर चीज़ करवाते हैं। जी, बट यहाँ पर जो हमारे टीचर्स के एंड से नाअहली आती है ना, कि हमारा जो एक मेजॉरिटी तबका ऐसा हम्म, भी है, जो ये बात सुनते ही कि या अल्लाह सैटरडे को स्कूल आना पड़ेगा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स के हाँ, लिए, या फिर थोड़ा-सा आफ्टर स्कूल अगर 2:30 बजे छुट्टी है, तो उसके बाद इवन अगर आपको स्कूल बिठा रहा है, आपको लंच करवा रहा है, आपको सारी फैसिलिटी जी, प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग करवाना चाह रहा है, तो क्या स्कूल को कोई खर्चा नहीं लगता है इन चीज़ों में? कितना हेफ्टी बजट वो इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ पे, ये अंदाज़ा नहीं होता उनको। उनको बस ये सुनते ही बुरा लग जाता है टीचर्स को कि अब हमें आफ्टर स्कूल स्टे बैक करना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग्स क्यों भाई, ट्रेनिंग्स क्यों दी जा रही हैं हमें? तो देखिए, हर yes, दफ़ा ना प्रॉब्लम ये भी तो नहीं है ना, अभी जैसे थोड़ी देर पहले असल में आपने एक पॉइंट कहा था ना अपनी प्रेज़ेंटेशन में, कि a lot of schools actually have this late sitting culture, and then it's kind of being हम्म, glorified. But I would yes, say, देखें, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा-पूरा मंथ ही वो लेट सिटिंग करवा रहे हो। वन्स इन हम्म, अ व्हाइल तो हर किसी का राइट बनता है ना, अगर कभी-कभार कोई आपको वन्स इन अ मंथ या वन्स इन 2 मंथ्स अगर आपको फोर्टनाइटली बिठा लें, थोड़ा उसमें आपकी अपनी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ हो रही है, तो देयर जी, इज़ नो हार्म इन इट, राइट? क्योंकि हमारे टीचर्स तो हर बात में ही फ्लिंच करने लग जाते हैं ना। दे हम्म, लाइक आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट देयर इज़ अ लाइक वाइड क्राउड आउट देयर जिसको ये प्रॉब्लम है। फ़ौरन हम्म, से उनका रोना-धोना शुरू हो जाता है कि ये सब हमें क्यों करवाया जा रहा है? तो आपकी जी, बेटरमेंट के लिए तो करवा रहे हैं ना यार, जी, जिससे आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ होगी। तो इससे ज़्यादा एग्जैक्टली। और क्या चाहिए फिर, मतलब एक टीचर को? You know what, Miss Jaweria, teachers also need to be flexible in their approach. वेरी They ट्रू, need वेरी ट्रू। they need to be very flexible in their approach. Like even if the school is providing professional development, professional development is not easy nowadays because it comes with, it's very costly, बहुत, and वही not तो मैं आपको कह रही हूँ, and ये if certain educational institutions are going to the extent of bringing a trainer to provide those यस, those professional इंटरनेशनल development, ट्रेनर्स होते हैं, इतना खर्चा avail होता है, it, बहुत होता है। avail those opportunities. Because you see, if you do it on your own from your expenses, it's going to fall heavy on your what you can say, पॉकेट। on your pocket. ऑल्सो उसके लिए सबसे पहले ना ग्रोथ माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। जी, हमें अगर लगता है ना कि हम अगर, जैसे अभी हम बात क्या कर रहे हैं, प्रमोटिंग हार्मनी एट वर्क प्लेस, तो सबसे पहले तो yes, एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि चेंज फॉर एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द विद इन। हमारे yes, अंदर से ही किसी भी चीज़ की तब्दीली शुरू होती है, राइट? और उसके लिए हमें खुद पहले तो बहुत एक साउंड माइंड और एक पॉजिटिव नेचर और एक मिजाज के साथ अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जी, हमें कभी कहते हैं ना कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। अगर yes, आपने प्रोफेशन ही ऐसा चूज कर लिया ना जो आपके मिजाज के खिलाफ है, या जिससे आपका टेम्परामेंट ही मैच नहीं करता, तो फिर आई एम सॉरी, आप कभी भी उसमें फ्लरिश कर ही नहीं सकते। exactly, अगर आप टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपको अपने अंदर इतना सब्र का मादा पैदा करना पड़ेगा कि दिस इज़ अ वेरी, 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 वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, सुपर चैलेंजिंग, और yes, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अगर आपको बस ये लगता है कि मैं सुबह 8 बजे उठूँ और मैं स्कूल पहुँच जाऊँ और 2 बजे घर आ गई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ है ना रेनबोज़ एंड सनशाइन है, कोई काम नहीं होगा, कोई भी कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो माय डियर, यू आर एब्सोल्यूटली रॉन्ग। एनीबॉडी हू yes. थिंक्स दैट, then बिकॉज़ ये that होता ही नहीं है। then that person is not fit to be a teacher, If doesn't he or she deserve is to be not in this fit, field. they don't deserve to be in this field. Very true. Because Exactly. सीधी-सीधी बात है, it's this profession actually demands your heart and soul to be put into it. Yes. मतलब Miss 24 Javeria, आवर की ड्यूटी है ये। आपको पता है, मिस जवेरिया, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. आई हैव बीन दैट टीचर who has worked, I started off my career as a substitute teacher, which I did not mind. Because there are people who work with extrinsic motivation and intrinsic motivation. एब्सोल्युटली I'm ऐसा ही that person who works with intrinsic motivation. Intrinsic motivation means अपनी खुशी के लिए. It's a अंदर से जो passion. आपकी स्प्रिंग होती है। It's a passion, वेरी right? वेरी ट्रू, वेरी and ट्रू। there are people who do take up a certain job for extrinsic motivation कि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो ये भी एक एक माइंडसेट है लोगों का कि हमें ज्यादा पैसे, if we do take up this particular job with a list of these JDs, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. ये भी एक चीज है. you know Everything doesn't come with with money. It वेरी has to ट्रू। come from within. If you call और yourself, इसी
इसी बात से ना मुझे एक और बात याद आई। अभी रिसेंटली आपको याद होगा उसी पोस्ट की जहाँ बात कर रहे थे, जहाँ वी वर लाइक बैश्ड फॉर आवर इनपुट। Yes, for our तो comments, अभी उधर exactly. किसी ने कहा था कि जब आपने कहा था कि यू आर एट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बैक इन द डे, एंड यू मेंशन दैट थिंग लेटर ऑन कि दैट यू आर आल्सो पेड फॉर योर एक्स्ट्रा Yes. रिस्पांसिबिलिटीज एंड हाँ, ड्यूटीज, राइट? बट देखिए हाँ, हर जगह तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करती है, अगर नहीं आपसे दो चार करेंगे। काम एक्स्ट्रा ले लेती हैं आपकी जेडी से हट के, विच आई नेवर माइंड। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गुड 14 इयर्स दैट आई एम इन द इंडस्ट्री। और ऐसे सैकड़ों स्कूलों में मैं रह चुकी हूँ जहाँ पर मुझे लिटरली शाम के 5-5 बजे तक भी स्टे बैक करना पड़ा, और मुझे जी, कभी कोई एडिशनल अमाउंट नहीं मिली उसके लिए। हाँ, जी, लेकिन आपकी खुद की एक वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट आपके हेड्स की नज़र में, आपके yes, अपनी आपकी लेट अलोन आपकी अपनी खुद की, लेट अलोन एनीबॉडी एल्स, आपकी अपनी खुद की भी अगर नज़र में आप देखें ना, तो हुँ, आप खुद एक डेवलप, आप एक लेवल अप करते हैं, आप कुछ सीख रहे होते हैं, आपकी जी, प्रोफेशनल ग्रोथ इट टेक्स प्लेस। आप एटलीस्ट यू लर्न हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर, you yes, build, you develop that kind of an aura, that mindset कि आपको पता होता है कि देखो आपको कितनी सारी मल्टीटास्किंग और हैंडलिंग आती है। इसका जी, मतलब ये नहीं है कि मैं ग्लोरीफाई कर रही हूँ लेट सेटिंग्स को या ज्यादा काम को, लेकिन जो लोग जी, हर बात में बस एक कराहत महसूस करने लग जाते हैं ना, हर चीज में कोफ्त खाना है जी। कि यार ये 2 काम भी एक्स्ट्रा दे दिए अगर अपनी जेडी से हटके, तो कोई बहुत बड़ा कोई बवाल हो गया, कयामत आ गई, पता नहीं In वावेला fact, करके। I would rather take it as a plus point that I learned something extra. एंड एटलीस्ट पीपल बिलीव्ड इन योर पोटेंशियल इनफ दैट दे थॉट यू कैन Yes, केटर टू इट। हर काम exactly. को नेगेटिव होना नहीं होता। ये जो आवाम का प्रॉब्लम है ना, ये एक अजीब मेंटालिटी डेवलप हो रही है, ये टोटली एक मेनियाक बिहेवियर है यार, ये तो मेरे हिसाब से तो All इट्स right. नॉट नॉर्मल। Okay. So we come now to the conclusion, and I just have one word conclusion, that is build a positive workplace culture. When this is established, we will have less complaints, less toxic complaints, less ranting, from the, and we will have more of happy people, happy employees, and less of unhappy employees. And also it will lead to more flexibility and a better work relationship between the employer and his or her team or his or her employees. राइट। So this brings my presentation to an end. So, Ms. Jaweria. Yes, it also is just about to end our Mm, time for our presentation, the entire, I mean, live stream. So, yes. yep. Any other questions that we have seen? This person, Mahir, also mentioned something. Would you like to say something to her, Miss Sabina? Her messages there. Actually, Mahir is writing that I know I will be ranting after what I just shared about my organization, and she's saying about that she will be ranting. All right, because she's noticed something. So some things are important. Yes, rant, but rant, not that you constantly just keep, right? Because see, don't remember, your well-being is also very important at the same time. All right. Yeah. It's good to create awareness about your organization with others, but do not make it a habit. All right. And that's all. I think your session is coming to an end, Ms. Javeria. So if you have any questions, you can share it with Ms. Javeria, and then I will answer it accordingly. All right. You can post it in the comment section and we'll get back to you accordingly. And yes, Yes. thank you so much for joining in, who to anybody who did. And No. again, the Thank you final. so much, Ms. Javeria, for giving me this opportunity. You're I most hope, welcome. It's always wonderful to love from seniors and mentors. बहुत अच्छा लगता है yes. डेफिनेटली, माशाल्लाह यू पीपल स्पीक आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। तो मुझ Wow. समेत बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। And बहुत कुछ. it's always a pleasure to feel positivity around us, still amidst the chaos and negativity that we have to face in one way or the other almost every other day. Still, it's like always good to have positive people with growth mindsets around us to motivate us, और हमें Hmm. पॉजिटिविटी एक आगे एक मतलब कॉन्स्टेंटली हमारे काम में जो हम करते जा रहे हैं आगे बढ़ते रहने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सब मेंटोर्स को, सीनियर्स को, आप जैसे तमाम लोगों को देख के मिलती है कि अभी भी अच्छा सोचने वाले लोग हैं और अच्छी बातें स्प्रेड करने वाले, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि बिल्कुल इस इंडस्ट्री को डिजर्व नहीं करते और वो आ रहे हैं और इतना कुछ मैस फैला रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो कर रहे हैं, प्लीज़
या तो आप खुद बैठ के डिसाइड कर लें एक दफ़ा में कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोफेशन और नॉट, क्योंकि अगर आपका ये माइंडसेट ही नहीं है ना, तो दिस प्रोफेशन इज जस्ट नॉट फॉर यू। एंड ये क्या, बल्कि कोई भी प्रोफेशन होगा ना, देखें वो डिमांडिंग तो बहुत होगा, सही है ना, बिकॉज एवरी वर्क प्लेस, एवरी जॉब, एवरी ऑक्यूपेशन, हर रोल जो है इट कम्स विद इट्स ओन बैगेजेस ऑफ वर्क। तो उस चीज़ के लिए आपको अपना ये एक माइंड डेवलप करना ज़रूरी होगा, बिकॉज The मतलब live stream is ending. Jaweria warning आ रही है. जी जी, Warning यस वी स्टिल हैव गुड 4 मिनट आ समथिंग, रही है. सो या। तो बस ये माइंड अपना जो है वो है ना, आप अपना डेवलप करें कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, और लोगों को भी जो है वो सिर्फ अच्छी मतलब बातें सिखाएं। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप, इट्स बेटर टू क्वाइटली लीव, पैक अप एंड लीव, रादर देन जस्ट, आई मीन, Mhm. क्रिएटिंग दैट क्रिएटिंग सच नेगेटिविटी एट दैट वर्क प्लेस कि जो अच्छे खासे तरीके से काम कर रहे लोग उनकी भी बदगुमानी पैदा हो जाए। क्योंकि देखो, बिलोंगिंग टू Yes. एनी रिलीजन, एनी सॉर्ट ऑफ बिलीफ व्हाट्सोएवर, ये तो हर अकीदे का मानना है ना कि बदगुमानी फैलाना गलत बात है, कुफर है, गलत है। बदगुमानियां Mhm. ना फैलाएं किसी भी चीज को लेके। अगर इफ समबडी इज नॉट हैप्पी विद देयर वर्क, अगर आप दूसरों के माइंड में एक अजीब सा इल्यूजन पैदा कर रहे हैं उस चीज के लिए, एक बैड थॉट पैदा कर रहे हैं ना, तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं आंसरेबल आप खुद भी होंगे। एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो एनीवन हु, एवरीबॉडी नोज देमसेल्व्स लाइक रियली बेटर, राइट, बहुत अच्छे से हर कोई अपने आप को जानता है। सो किसी के भी अंदर अगर इस तरह का एक फीलिंग या माइंडसेट या थॉट प्रोसेस होना, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फ्रॉम नाउ ओनली। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें प्लीज़, और योगा वगैरह करने लग जाएं, Yes. मेरी तो यही एडवाइस होगी, क्योंकि वो आपको ऐसे ही माइंड बॉडी सोल कनेक्ट करता है ना। तो ये सारी आप बहुत ज़्यादा अपने आप से इंटरकनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअली थोड़ा सा लेवल अप होते हैं ना, तो आप ज़रा ये मतलब उल्टी सीधे फसाद वाली चीज़ें ना फिर दिमाग में कम आती हैं, और अच्छी चीज़ें प्रमोट होती हैं। ठीक है, बाकी एनीथिंग फ्रॉम योर साइड मिस सबीना बिफोर वी बिड फेयरवेल टू देम? Nothing. या, Nothing. It's all being said. Okay, Ms. Javeria, thank you for the opportunity, for sharing my insight, and for also being quite supportive with your insight. थैंक यू सो And मच। I hope we have delivered our best so that the audience learns a lot, from today's presentation. और जो हमारी तरह का माइंडसेट रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हु आर ऑन द सेम पेज विद अस, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर इट अमंगस्ट योर पीयर्स, colleagues, friends, family, anywhere, everywhere possible where you feel that this might, aid somebody, in a way or the other, ताकि we can create this, I mean, a positive environment that helps everybody flourish really happily, both as an individual and a professional. सो विद दिस, इंशाल्लाह अब इस पॉडकास्ट सीरीज का आखिरी एपिसोड रह गया, एपिसोड नंबर 9, जिसके साथ मैं इंशाल्लाह विद अ न्यू गेस्ट आप लोगों को मंडे को मिलूंगी। और यस, टिल देन, जस्ट स्प्रेड द वर्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, टेक लोड्स ऑफ केयर, एंड गुड बाय। Goodbye. हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.